जो retiring benefits whatever, but within the constitution, the fundamental rights, anything in I have attempted for the past 23 years. This is what I do day in day out. Murder appeals, more than 3,000 I have argued in High Court, and on many occasions I have tried arguing an appeal of a dead man, but never had luck, ever. So I was very anxious. Maybe you never came before me. Late in the day, sir. You may have been luckier. No, but here the question, there's another added problem. I just thinking aloud. माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला। Father, why should he be prevented? Because I mean, it also affects that person. I mean, you are the son of that murderer. I mean, okay, it has societal consequences, it has family consequences. So but here we have the added problem that none of the legal heirs are coming forward. So let's not kill it completely. Let us keep it alive, the issue. 1898 में रुक गई बात. Maybe let's keep the issue alive. Because after all, it's a code of criminal procedure. No, what about... So it is not, technically speaking, I mean, it has legal things, but we can look at certain constitutional provisions, the fundamental rights. I don't know if you can have an expanded discussion on Article 10A, right to fair trial, and appeal is incorporated in it, and appeal is a right, and sort of, removal of a stigma is a right, and all that. वो तो एक दफा पंडोरा's box खुलता है तो फिर वो सारी मगर वो इस केस में हम कर नहीं सकते क्योंकि कोई मगर अगर आप उनके लीगल एयर होते तो आप सुन लेते, मगर आप तो वकील हैं इस केस में। लीगल एयर्स क्योंकि नहीं है, इन अनदर सर्विस मैटर वी आल्सो सेड सर्वाइवेबिलिटी रहती है स्टिग्मा की वजह से वगैरह वगैरह, लेकिन लीगल एयर्स मस्ट कम एंड से दैट उनके बगैर आगे बढ़े। तो वो सवाल प्रॉब्लम। दूसरा ये मैंने 3 दफा आई सॉट जजमेंट्स इनकन्वीनियंस कॉज हुई उसकी वजह से। वन इज द फाइन इन द सेंटेंस itself, but there could be other monetary consequences like pension and all. That's not covered. वो मैंने judgments, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ऐसी कई केसेस आए जहां पर उन्होंने कहा सर्विस बेनिफिट्स इफेक्ट हो रहे हैं, पेंशन इफेक्ट हो रही है। That's not covered. The honorable judges, वो हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, मैं वो भी लिस्ट सबमिट करवा देता हूँ। 5 से 7 ऐसे केसेस हैं, they were not entertained. उन्होंने कहा number 1, it has to be punishment, that to fine. Even there is one landmark judgment, sir. आज तक एक जजमेंट आई है ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक ऑफ लाहौर हाई कोर्ट. इट इज अ वेरी एलैबोरेट जजमेंट, अ ट्रीट टू रीड एज वेल. He has developed उन्होंने jurisprudence सारी डिस्कस की है लॉ ऑफ अबेटमेंट जिसमें ये सारे फैसले भी रेफर किए हैं. एंड व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड उस केस में compensation थी, fine as well as compensation for 302, or compensation was also substantial 5 lakh rupees. Legal heirs came, were aggrieved, और उसमें लिखा हुआ है लीगल एयर्स वर वेरी एंशियस. स्टिग्मा वाली बात भी थी. उन्होंने कहा कि कॉम्पनसेशन भी 544 की नहीं आती बिकॉज दैट इज नॉट पनिशमेंट, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस. सो कॉन्सिक्वेंस वुड नॉट बी एंटरटेन्ड, इट हैज टू बी. सो पनिशमेंट तो वो तो आर्टिकल 6 और नहीं. अगर हम इसकी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामिन कर रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल एयर्स है, then this could have been a ground on the survivability of the issue, but वो है ही नहीं, सारा सवाल ही नहीं चल सकता. What would you say about section 561A of the criminal procedure code? जी लॉर्डशिप वो if you can first read it. जी inherent powers तो हैं. So but there is a specific provision. So Salman, all the provisions the CRPC are subject to 561. वो तो होती हैं सर. Salman sir, please. Sorry, for my understanding. जी sir, please sir. This appeal has been filed under subsection 3 of section 12 of the Criminal Law Amendment Special Court Act 1976. Sir. How does the Criminal Procedure Code is attracted in case of this appeal? Because the special law does not say so. Your Lordship, I was anticipating that question and I have come prepared on that point. मैं assist करता हूँ sir. So kindly see. पहली बात तो ये है
Section 431 refers to all appeals. Section 431 on 2 occasions refers to law to death. Death has been explained in the law of abatement. इस सेक्शन में 417 का भी जिक्र है, which is appeal against acquittal, कि वो भी अबेट हो जाएगी. जो जिस सेक्शन की तरफ जनाब इंडिकेट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, 12(3), वो है any party who is aggrieved from the final order or judgment of the special court. So it could be an appeal against conviction, it could be appeal against acquittal. I think the question is whether criminal procedure code applies to that tribunal. Your Lordship. Yeah. Number 1, sir, definitions में section 2A CRPC applies. Special law. Special law. Sir, first of all, I would refer to 2A. Section 13 पढ़ लीजिएगा. मैं 13 पढ़ लेता हूँ. ये जी ओवरराइडिंग इफेक्ट है सर. लॉर्डशिप, आपकी इजाजत से इससे पहले 12(3) में जिसमें अपील है, एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द फाइनल जजमेंट of the special court may prefer an appeal to the Supreme Court within 30 days of the passing of the judgment. Now, this appeal has not been filed under any provision of the criminal procedure. It has been, sir. मैं अब यही justify करता हूँ. It has been filed कि under this वो special कैसे? law. Your Lordship, this is 13 जरा पढ़ लीजिए. 13, sir. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in the Code, the Evidence Act 1872, or any other law for the time being in force. Overriding effect. Now, Your Lordship, my submissions to satisfy my Lord on that query would be, number 1, this is not an appeal under section 185. This is a direct appeal to the Supreme Court for the first time. This is a case of first impression. Never before anyone has been tried for high treason. And this law has been very rarely put into use. Very rarely. There are no reported judgments of this special law. Section 2A of the law, the opening lines, code to govern the proceedings is CRPC, 2A. Then the entire case, 87 हुआ, 88 हुआ, 265K हुआ, 512 हुआ, 514 हुआ, 342 हुआ, वो सब का सब यहाँ रेगुलेट हुआ. दूसरा ये भी है कि जो 13, to my reading of 13 is that if there's any provision in this act which is inconsistent with the code, then code will not apply. So, but मैंने उसको उस aspect को भी Your Lordship देख लिया. This is the one and only trial ever taken place pursuant to this law in Pakistan, sir. Naturally, yes. There is. Yes, sir. This is a case of first impression. Or now, can you come to the 561A? Unless you have to say more on this. Your Lordship, मैं इसको conclude कर देता हूँ कि इसमें अगर कोई मेरे पास और फाइल, एक तो I would like to refer to the definition of abatement in blacks. आपने जो बात अर्ज की, आपने कहा कोड अगर इससे तसादुम रखता है तो ये लॉ प्रिवेल करेगा, अदरवाइज कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं. जितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं टेररिज्म पे, नैब की, एंटी करप्शन की, स्पेशल कोर्ट्स की, जितनी हैं, the principle is with death. The corporal punishment, monetary nahi hai sir, are exacted from the body. The body is no more. The appeal will abate. It will not continue. Continuance is a possibility if family steps in through Supreme Court rules, through a formal application. That too. आज sir family आ भी जाती. The law of the country does not permit the family. This is my speaking for myself. Unless my lords would permit them, stigma ground पर फाइन नहीं है. जब फाइन नहीं है तो फैमिली आ भी जाए. नहीं, वो हम देखिए, हम दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं. हम उधर आज हमें ऐसा
देखिए एक बुनियादी असूल ये होता है कि मफरूजों के बेसिस पे आप फैसले ना करें। जी सर। तो कल किसी की राइट चली जाए और वो कहेंगे जी आपने तो अपने आप पे ये तो एक्चुअल कोई आएगा लीगल एयर्स वो शायद ये पॉइंट रेज करे तो हम इसको दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं, ये तो आपको वाज़े तौर पे कर दें। मगर मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपसे पूछ रहा हूँ 561A में अगर हम दरवाजा खोलना चाहते तो वो ही लीगल अर्ज में खोलते, मगर हम 561A का सहारा लेकर के शायद खोल सकते या नहीं खोल सकते। आर्टिकल ऐसी आपकी सिंस आप मौजूद हैं और माशाल्लाह काफी महारत है क्रिमिनल लॉ में, इसलिए हम आपका प्रेजेंस का फायदा उठा रहे हैं प्योरली एकेडमिक। I must confess this was the most difficult brief that I have handled so far. High treason इससे पहले कभी ऐसा था नहीं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें सर। It came to me as a surprise. There were as many as 21 prosecutors appointed to bring home the guilt of the appellant, and I was the only one defending him, and that too जो मेरा एक गिला था। गिला जी योर लॉर्डशिप था। ये तो फिर आपका तस्दीक कर रहे हैं कि I am equal to 21। योर लॉर्डशिप, even I was ousted from the proceedings, और वो then I had to go to the Islamabad High Court। चले वो छोड़ें, ये पॉइंट to my rescue, और मुझे वो सुनते बाद में, मगर ये पॉइंट बताइए। योर लॉर्डशिप 561 आपने जी कहा कि मैं वो 10A पे खड़े होते नहीं 10A पे खड़े होते, 561 पे खड़े होते ऐसी। लॉर्डशिप ये तो हम अगर वो शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स एक नई विंडो खोलनी पड़ेगी, और उसके लिए इफ माय लॉर्ड्स आर इंक्लाइंड नहीं we would only be if the legal heirs had come कोई आए तो and they had challenged the viceroy। अगर कोई आता तो हम खोले ना। लॉर्डशिप अब वो कहना मुनासिब तो नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी अप्रिशिएट द स्टेप्स दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑलरेडी टेकन। द लीगल एयर्स आर नॉट इन द कंट्री। नहीं वो हमें उनको पता चल गया। अच्छा अब एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, you said you had very grave reservations about the Lahore High Court. What were the grave reservations about the Lahore High Court? Your Lordship, you said I do not even appear in. Your Lordship, I was assisting. My engagement was to the extent of. ऐसी पूछ रहा हूँ। सिटी में आपने बहुत ही बिल्कुल। उसके बाद वो तो लॉर्डशिप I am not before the honorable judge for many years, even in the Supreme Court of Pakistan. Why? So मैं पेश उनके पास नहीं हो रहा। You want to disclose or not? I would not like to disclose. जनाब मुझे in chamber person तलब करना चाहेंगे, मैं explanation। नहीं हम chamber में नहीं बुलाते किसी को। शाह साहब is aware, but for personal reasons, purely for personal reasons। शाह साहब is aware। लॉर्डशिप मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन भी थी, स्टैंड भी था, तो मैंने इन ऑल फेयरनेस मैंने उनको वो आर्ग्यू करना चाहते थे वो किया, बट और इन द मीन वाइल मैं ये भी एक्सप्लोर कर रहा था कि फैमिली मुझे देयर हैज टू बी अ फ्रेश एंगेजमेंट। मैं ये भी कहना चाहूंगा माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टर्मिनेट्स ऑन डेथ ऑफ द वकालतनामा खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वकालतनामा खत्म हो जाता है, क्योंकि कल आके वो कह सकते हैं आपको किसने इजाजत दी। किसने इजाजत ये ये लोगों को बुलाएं। ये प्लीज सर एक चीज बताइएगा related to this. You see, this was a case which was forced upon the federal government by this court, but they did not go back to 12th of October. Now, in the light of the amendments made in the Constitution, Article 270 AA, read with Article 12, is the door still open to proceed against those who collaborated in what had happened on 12th Lordship, October? Had I been given the mandate to argue the appeal,
my opening grounds would have been that this is a case where a constitutional crime has been investigated and prosecuted in an unconstitutional manner. For the reason, the obvious, the visible, the aiders, the abettors, the collaborators, those who were involved in the consultation process were dishonestly, there was a let-off. All the members, ये National Assembly में ये सारी की सारी endorsement हुई इसके ऊपर, Prime Minister की involvement थी, Law Minister की involvement थी, Proclamation of Emergency के आप ऊपर देखें कि कौन-कौन से लोग हैं जो involved थे, even honorable judges as said by. For myself, I have a different view. Not been legalized, legitimized by this court. There would not have been 3rd of November. Of course, sir. But could 3rd of November have been directed, the federal government could have been directed to initiate from 3rd of November and leaving or ignoring 12th of October? Your Lordship, this was actually attempted right before the decision of the special court. The old prosecution team was notified, denotified, and a new one was notified who stepped in and filed an application that this complaint has not been filed correctly. And there should be certain amendments and changes in the number of accused and in allegations as well. But that application was not entertained, and in a haphazard manner, without recording 342, without listening to my submissions, closing speech, without leading defense evidence, a judgment was handed down, which was not a unanimous judgment. मगर ये अटेम्प्ट होने की कोशिश इस ट्रायल के अंदर भी हुई कि आप इन सारे ओवरऑल whoever was involved, इसका कैनवस बहुत वाइड था. Why target and narrow it down only to one person? This is repellent to common sense that these actions could have been taken single-handedly by one person without the advice of everyone. खैर ये तो मफरूजों में जा रहे हैं मगर ये तो उससे तो कोई बात नहीं होगी कि कलेक्टिविटी विल abolish the individual act. वो है. It only points towards unfairness. हम जरा 5 मिनट के लिए उठते हैं और शायद फिर आज ही सुना दें उन सीपीज में भी. उधर तो आपको कुछ नहीं कहना है ना, और इसमें भी. ठीक है. Thank you.